Dear Scout and Guides, we used to go for camping and hiking, and also sometimes in our house also, or in our patrol camps also, we need certain things which is required to prepare that trek. Even sometimes when we are going for a hiking, we need to use our ropes in our life. So there are different types of ropes. So I am not going to discuss about ropes because now there are so many types of ropes are available in the market, whether it is a cotton rope or a jute rope or even the steel wire rope or nylon rope. And there are so many ropes out there. Only a scout, when he completed service, Pratham Sopan, he has to learn certain ropes. So now we are going to discuss with you a different type of knots. Now I will talk about only a first knot, which is a very important knot, reef knot. So the reef knot, the first we must know where we have to tie the reef. The reef knot is also called doctrine. So doctrine knot means doctrine where it is going to tie the knot. It means to tie not only to bind it, right? So same way, if anyone will ask us where the reef knot has to be tied, so we have to say that the reef knot is tied to two ends of a same rope. This is the same rope, right? Now I am showing. So there are two ends. On your working hand, it's called running end. On your another hand, it's called dead end, right? So whenever there is a need of tie two ends of the same rope, reef knot is always changed. तो reef knot कहाँ यूज होती है? जहाँ पर सेम रोप को हमको बांधना है एक दूसरे के साथ, उसकी यानी कि उसके एंड को बांधना है। जैसे कि आप पट्टी बांधते हैं, पट्टी के अंदर होता है, आप जूते के जब फीते बांधते हैं तो उसके अंदर भी आप भले ही दूसरी नोट भी आप लगा, लेकिन स्टार्टिंग होती है वो हाफ रीफ नोट या हाफ नोट से। तो अभी आप देखिए रीफ नोट कैसे बना, ठीक है? इसका सिंपल उदाहरण बताता हूं मैं आपको। दैट मेक वन लूप, अ सिंपल लूप, आप इसको बोल सकते हैं सांप का बिल है। स्नेक, सांप है, बिल से बाहर निकला, राइट? बिल के चारों तरफ चक्कर मारा और वापस बिल में घुस गया। और उसके बाद जब हम टाइट करेंगे देखिए इस टाइप से ये फिगर ऑफ इट ये टाइप में बन जाता। सो दिस इज कॉल्ड नीड्स। अगेन आई विल शो यू अ सेकंड मेथड। ये राइट हैंड पे रनिंग हैंड को ऐसे मार देखना है, वापस इसके ऊपर रखना है। फिर जो ये दूसरा है डेड हैंड, इसको वापस इसके नीचे से ही वापस ले जाना है और इसको वापस लूप के अंदर से डाल देना। और जब आप क्रॉस करेंगे फिगर ऑफ इट, ये सही है या नहीं है इसको आप देखेंगे तो ये दोनों जो एंड है वो एक ही डायरेक्शन, तो आप समझ लीजिए आपकी नोट गुड सही है। लेकिन वही यदि ये एंड आपका यदि टूटा हो गया तो देखिए आदमी ये अलग अलग डायरेक्शन, जो रनिंग एंड है वो अलग है और जो उसका बाकी पोर्शन है वो दूसरे डायरेक्शन। इसका मतलब ये आपकी नोट गलत हो। तो हमेशा जब आप बांधेंगे तो आपको इसी तरह से वापस आपका जो एंड है वो अपनी ही रस्सी के हिस्से के साथ में होना है। जैसे आप ये देखिए दोनों तरफ सेम डायरेक्शन, इधर गई सेम डायरेक्शन, तो ये reef knot. So reef knot. Now again, where the reef knot you are going to use? You are going to use reef knot where the two ends of a same rope is tied together.
यानी एक ही रस्सी के दोनों सिरों को बांधने के लिए 3 short we do. Have a practice, then we will meet again for another knot. प्रैक्टिस कीजिए और अगली बार दूसरी knot के साथ मिलिए.